ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आजकल एक बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है मेरे खिलाफ कुछ लोगों की तरफ से। एक तो दिमागी मरीज है, उसकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, बिल्कुल बेसलेस प्रोपेगेंडा। और उस प्रोपेगेंडा की बेस ये है कि जब उसने गंदी हरकतें की, झूठी बातें की, तो उसको जब पकड़ा, कन्फ्रंट किया, तो वो भाग गया, दौड़ लगा दी उसने। इस बात को कुछ साल से ज्यादा, सवा साल हो गया। तो अब चूंकि वो बाहर चला गया, तो अब वो अपने आप को सेफ समझता है, क्योंकि अपेरेंटली जब वो सेफ नहीं था तो इस वजह से वो अपना मुंह चुप करके बैठा हुआ था रिपोर्टेडली। लेकिन चुप करके नहीं बैठा हुआ था, कॉन्स्टेंटली भौंके जा रहा था। व्हाट कैन यू डू, यू जस्ट इग्नोर इट एंड यू होप कि शायद जब ये बाहर जाएगा, थेरेपी लेगा, ठीक हो जाएगा। तो जो इश्यूज जो थे उसके ऊपर तो इसके पास कोई जवाब नहीं, आज तक उसने कोई जवाब नहीं दिया उन बातों। तो अब क्या करें? जेलसी भी है, शक्ल से भी नफरत है, लहजे से भी नफरत है, मेरी रीच से भी नफरत है, मेरे तंजो मजाक से भी नफरत है। जेलसी, लिविंग अंडर द शैडो ऑफ द ग्रेट हारिस सुल्तान, ओ सो दैट्स हाउ ही बिलीव, इवन दो आई डोंट बिलीव दैट वे। तो ये सारी चीजें अब क्या करें? अब उसने कहना शुरू कर दिया कि ये देखो जी, ये हिंदुइज्म को नहीं पेलता, ये क्रिश्चियनिटी को नहीं पेलता। और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मे बी द पर्सन हैज ए डिफरेंट टेक ऑन दिस, दे ऑलवेज गो फॉर कंस्पिरेटोरियल एंगल के शायद इसको पैसे मिल रहे हैं। अगेन, छोटा आदमी, छोटी बात, छोटी सोच, ऐसे रहेगा। 7 अक्टूबर ज़ायनिज़्म, इसराइल और गजा की जो जंग होती है, पे भी यहूदियों से पैसे द सेम ओल्ड ट्रोप्स, जो हर एक नाकाम इंसान जब उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता तो इल्जाम लगाता है। हालांकि एज एन एक्स मुस्लिम जो कि इस्लाम का नाकिद हो, उसके लिए ये ज्यादा सपोर्ट करता है। ये इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ नैरेटिव ऑफ गेनिंग मोर क्लाउड, इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर एन एक्स मुस्लिम टू टेक द साइड ऑफ मुस्लिम्स ऑन एनी गिवन इशू। और जो पॉपुलर नैरेटिव है इस वक्त, वो प्रो पैलेस्टाइन है। जो प्रो जायनिज्म हो या प्रो इसराइल हो, वो तो पूरी दुनिया में बड़ा बड़ा मुश्किल, अनपॉपुलर ओपिनियन है। तो अगर आपने सिर्फ क्लाउड लेना हो तो यू शुड गो विद द अदर एंगल, बट ऑब्वियसली आई हैव टू लुक एट द issues objectively as I can, and therefore I have a stance on Israel-Palestine issue. But they appeal to emotions and then they go to conspiracy side. But then there's other side of it कि मैंने लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दी। जब मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी तो ऑब्वियसली मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, इतनी डिटेल भी मेरे पास नहीं है। तो कभी भी डेडिकेटेड वीडियोस ना हिंदुइज्म के खिलाफ बनाई, ना कभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस। लाइव स्ट्रीम में जब कोई आता है, ऑब्वियसली उर्दू की साइड पे, इंग्लिश की साइड पे मेरी मोस्टली ऑडियंस जो है अमेरिकन, ब्रिटिश, सबसे ऊपर ब्रिटिश है। अमेरिका और इंडिया के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता, फिर कैनेडियन है, फिर ऑस्ट्रेलियन है। यानी ओवर 60% जो मेरी ऑडियंस है इंग्लिश चैनल पे, वो वेस्टर्न लोगों की है। तो ऑब्वियसली उनको मैंने ये तो नहीं बताना कि पाकिस्तान में आज इमरान खान ने क्या कर दिया या हिंदू मुस्लिम का क्या फटा हो गया। इट डजंट इंटरेस्ट देम, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद देम। वो वेस्टर्न इश्यूज के ऊपर बात, तो ऑब्वियसली उस पे मैं इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर काफी बोलता हूँ। तो जब आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर उर्दू वाली में तो बहुत सारे इंडियंस भी आते हैं। तो जब वो अपनी रिलीजियस सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो आप उसको डिबंक कर देते हैं, जो आपकी शेयर ओपिनियन होती है। लेकिन चूंकि मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता, अभी कल एक की, उसके अंदर एक हिंदू आया, वो हिंदू गॉड को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। गो वॉच दिस, बल्कि अलहदा से भी डाल देना उस कॉल को। तो वो मेरा स्टांस कभी चेंज नहीं हुआ। आई बिलीव ऑल रिलीजन्स आर फॉल्स एंड मैन मेड, बट व्हाई डोंट यू स्पीक with as much rigor or vigor against Hinduism or Christianity or even Judaism, with the same rigor that you have against Islam, for example. बड़ी क्लियर वजह है, मैंने कुरान को पढ़ा हुआ, मैंने बहुत सारी हदीसों को पढ़ा हुआ। मेरी जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई वो रिचर्ड डॉकिंस की बुक्स पढ़ने के बाद हुई, जो कि क्रिश्चियन एंगल से थी। एंड अगेन ही आल्सो डिड इट फ्रॉम क्रिश्चियन एंगल बिकॉज ही वाज अ एक्स क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ। सो ऑब्वियसली जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम के ऊपर ही बात करेंगे, ये डन एंड डस्टेड एक लॉजिकल बात है। तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हैं और उसके ऊपर भी अब मेरा इंटरेस्ट इतना वेन होता जा रहा है कि आई डोंट नेसेसरली स्पीक पर से, आई जस्ट द एवोल्यूशन ऑफ अ पर्सन। आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, आफ्टर सम टाइम यू लूज इंटरेस्ट। तो आप बाकी मजहबों के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ना नॉलेज है और ना इतनी उसके ऊपर गहराई में जाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी पोजीशन क्या है? ऑल रिलीजन आर मैन मेड, ऑल रिलीजन आर फॉल्स। तो आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? क्रिटिसिज्म आप उसके ऊपर तब करेंगे जब आप आपकी असम्पशन होगी कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो इक्वली बैड हैं फॉर सोसाइटी। क्रिस्टोफर हिचन्स ने कहा था कि अगर मैं 1930s में होता तो मैं उस वक्त क्रिश्चियनिटी के ऊपर ज्यादा बोलता, बट इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वाज क्रिटिसाइजिंग इस्लाम अ लॉट मोर, even though उसकी जो बुक थी वो भी क्रिश्चियन एंगल से लिखी गई थी, because again he was also a Christian, but in his debates he was actually going very hard against Islam. तो उसने कहा कि मैं 30s में होता तो मैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करता, because of क्रिश्चियनिटी की जो अलाइनमेंट थी हिटलर के साथ। तो उस वक्त वो ज्यादा बड़ा खतरा था। अब आजकल के जमाने में इस्लाम ज्यादा बड़ा खतरा है, तो इसलिए मैं इस्लाम के ऊपर ज्यादा बोलता हूँ। तो आप उसकी हायरार्की है कि कौन कौन सी डेंजरस आइडियोलॉजी है, किसका ज्यादा खतरा आपको, सबसे ऊपर इस्लाम है इस वक्त। एंड अस बीइंग एक्स मुस्लिम, दैट्स अनदर सेकेंडरी इशू। तो आप उसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं। तो प्रोपेगेंडा करना है, अगेन एज आई सेड, प्रोपेगेंडा उसने करना है क्योंकि उसके पास कहने को तो कुछ है नहीं। जाहिल आदमी को ना जेनोसाइड की डेफिनेशन का पता, ना ज़ायनिज्म की डेफिनेशन का पता। ही एक्चुअली हिमसेल्फ इज अ
professed Zionist because he believes that Israel has a right to exist. If you say Israel has a right to exist, then it means you're a Zionist because one of the claim is that Israel एक settler colonial ethno state है जो कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी है और इग्नोर कर देते हैं, which is a false claim. It's not true in its entirety because there are 60% of Israel are Mizrahi Jews which are Arab Jews. तो ये वैसे नहीं है. Even though उसकी foundation जो है you can argue कि that's a settler state, जिस तरह अमेरिका भी है, कनाडा भी है. कोई अमेरिका कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से गोरे वापस नहीं जा रहे यूरोप में बिकॉज हिस्टोरिकल कंजर्वेटिज्म का असूल है कि जो हो गया नाउ यू हैव टू फाइंड अ वे आउट. इसराइल का इशू इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि वन स्टेट सोल्यूशन नहीं चल सकता बिकॉज जो डेमोग्राफी होगी वो इक्वल हो जाएगी और मुसलमानों का अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया को खतरा है कि जहां पर भी वो 50% या उससे ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो वो स्टेट सेकुलर नहीं रह सकती. सो इसराइल इज एब्सोल्युटली राइट बीइंग अगेंस्ट द सो कॉल्ड वन स्टेट सोल्यूशन. सो सोल्यूशन क्या है? आई सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन के जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उनको आजाद होना चाहिए, बट दैट्स नॉट द कन्वर्सेशन टू बी हैड राइट नाउ. वो तभी होगा जब आपकी जो गजा में और वेस्ट बैंक में जो पॉपुलेशन है वो डीरेडिकलाइज होगी, क्योंकि अगर आप उसको फुल सॉवरेंटी दे देते हैं तो वो इसराइल को जो वजूद को तस्लीम नहीं करते, इवन दो पीएलओ हैज एक्सेप्टेड इट, हमास हैजंट, तो हमास को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है. सो दैट्स द पोजीशन इन अ नटशेल. सो ही इज आइदर अ ज़ायनिस्ट और ही इज अ प्रो जेनोसाइड. अगर आप इसराइल को खत्म करना चाहते हैं तो आप जेनोसाइड आप कर रहे हैं बिकॉज इसराइल को खत्म करने का मतलब है 7 मिलियन जूस को वहां से निकाल देना या मार देना. दैट्स द लिटरल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड. तो वो भी ये नहीं मानता. और दूसरी बात जो ये कहता है इसराइल को होना चाहिए, देन इट मींस यू आर अ ज़ायनिस्ट. अगेन इट्स सो स्टूपिड. द गाय इज सो मेंटली, उसका बेचारे का दिमागी तवाज़ुन इतना हिला हुआ है, उसको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं है. दूसरा इशू है कि भाई आप हिंदुइज्म के ऊपर क्यों नहीं बात करते. अभी कल जैसे मैंने आपको बताया लाइव स्ट्रीम का फॉर्मेट होता है कि जब आप बात करते हैं तो बात कोई करता है, जैसे कल हरिओम आया उसको पेल दिया मैंने हिंदू गॉड के ऊपर, दैट्स माय स्टेटेड पोजीशन. लेकिन डेडिकेटेड वीडियो जो मैं इस तरह की वीलॉग बनाता हूं के लिए आपको सेपरेट दिन में एक वीडियो बनानी होती है तो आप उसके ऊपर बात करते हैं. अब मैं क्या रामायण के ऊपर बात करूं? मैंने तो कभी रामायण नहीं पढ़ी, मैंने तो कभी वेदा नहीं पढ़ी. और जो मैं बात करूंगा वो उसी के ऊपर करूंगा जो मैंने पूरे तरीके से पढ़ी है. यस, अगर आपने मेरे से ये पोजीशन लेनी है कि क्या कोई हिंदू सुप्रीमेसिस्ट स्टेट होनी चाहिए, ऑब्वियसली आई वुड से नो. आई हैव ऑलवेज सेड फ्रॉम डे वन के इंडिया की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी प्लूरलिस्टिक नेचर है, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज और डिफरेंट बैकग्राउंड्स इंडिया में रहती हैं अंडर द बैनर ऑफ सेक्युलर इंडिया, व्हिच वाज इन लाइन विद द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द founding fathers. I fully support that. I have numerous times 2018 से मैं कहता चला रहा हूँ, the most sacred document in the Indian subcontinent is the Constitution of India, which ensures that all people, regardless of their religion, color, caste or whatever, that they're all equal in the eyes of the Indian state. That's my stated position. अब लेकिन आप अटैक क्यों नहीं करते बाकी रिलीजन्स को? जैसे मैंने कहा कि उसके लिए आपको ये assume करना पड़ेगा कि सारे रिलीजन्स जो हैं वो equally bad हैं, quote unquote, for society. Now that's simply not true. I genuinely believe not all religions are equally bad, and I've always held that belief. So for example, Christianity, I'm not a Christian. I'm not even a cultural Christian. The only association I have with Christianity वो ये है कि मैं Christian school में गया था और जब ऑस्ट्रेलिया में आया यहाँ पे Christian values के ऊपर ये countries evolve होके secular हुए. So that's the only relationship I have. Do I prefer Christianity over Islam? Absolutely. 100%. Hands down. अगर मैं इंडिया में होता, would I have preferred Hinduism over Islam? Absolutely. Because I would always be more sympathetic towards an ideology which is more accepting towards ideas of secularism and liberalism. Hardcore elements Christians में भी हैं, far right के, और hardcore elements Hinduism में भी हैं, just like any. But are those hardcore elements as dangerous as the hardcore elements of Islam? Absolutely not. They're nowhere near that. I genuinely believe that. तो मेरी position तो evolve नहीं हुई. Live stream is a different concept. Standalone videos. और ये सारों के लिए challenge है कि ये जितने जो भोंकते रहते हैं, इन्होंने कितनी standalone monologues बनाए हैं on other religions? They have not. Live stream में आके कोई caller आपको छेड़ देता है तो आप उसके ऊपर बात कर देते हैं. लेकिन मुझे I just found a video of my intellectual hero, जिसने मेरी intellectual awakening की, Richard Dawkins है. उसकी वीडियो भी मेरी नजर से गुजरी. I find it very heartening that even though I haven't read Richard Dawkins' book in I think 7-8 years. I have not really listened to him much. जब से उनको stroke हुई उसके बाद मैंने उनको नहीं सुना इतना खास. तो अब मुझे नहीं पता कि उनकी आखिरी 7 सालों में evolution क्या हुई. But he has always called himself a cultural Christian. I call myself a cultural Muslim as well. But I would prefer Christianity or Hinduism over Islam. Hands down, I would. As an atheist, I don't like any of these religions. कोई भी religion मेरी नजर में state के matters में involved नहीं होना चाहिए. लेकिन बाकी के जो religions हैं उन्होंने इस claim को छोड़ दिया. उनकी supremacy के उस तरह के ambitions नहीं है, dominant एम्बिशंस नहीं है जैसा कि इस्लाम के हैं. इस्लाम का हर कंट्री में ये हमने उनको रखा हुआ है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी इस्लामिज्म जो है वो स्टेट का रिलीजन नहीं है जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है. लेकिन हमें नजर आता है कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट वहां पे फ्रॉम टाइम टू टाइम उभरती रहती हैं. दे ब्रेक आउट एवरी नाउ एंड देन. जो पैन इस्लामिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आ जाता है. खिलाफत का मूवमेंट, ऑल्दो इट विल नॉट सक्सीड, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन उम्मा वन खिलाफत मूवमेंट, एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया, वो इरप्ट करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो देखें कि अगेन
this is just a coincidence कि I just ran into this video of Richard Dawkins. सुनिए Richard Dawkins क्या कह रहे हैं इस मामले में. And so, I must say I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. और ये कल्चरल क्रिश्चियन अपने आप को इसलिए कह रहा है यहाँ पे. अगेन, अब मैं तो कल्चरल क्रिश्चियन नहीं हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि क्रिश्चियन ethos जो है, they're not as bad as Islamic ethos, and you can extend the same thing towards Hinduism as well. Polytheism in general, they're not as violent as other religions. So there is definitely a hierarchy. अगर मैंने hierarchy बनानी हो, सबसे dangerous है इस्लाम in the current world. फिर उसके बाद Christianity और Judaism can be as bad, although उन cultures इतने evolve हो चुके हैं कि वहाँ पे एक ऐसी strong theocracy बनाने की कहीं पे movement है नहीं. Politically, yes, you can pander to either side, but there is no threat कि अमेरिका कल को एक Christian caliphate बन जाएगा या इसराइल एक यहूदी state बन जाएगी. On paper, yes, they have a lot of Jews, लेकिन Israel behaves like a secular state. And then the least dangerous out of all of the major world religions are Hinduism and Buddhism. They're the least dangerous out of all. Now, does it mean they're perfect in terms of even in a political sphere? No, of course not. They again, जैसे मैंने आपको कहा, इन सारे religions में movement है supremacy की, but they are so tiny that they are not as dangerous. They are not looking to overthrow this state. This is a very objective statement. Even though I'm not a cultural Christian, I can have a softer attitude towards Christianity or towards Hinduism. Hinduism in India, Pakistan, subcontinent concept, Christianity in the concept in the Western lens. So he's saying that, but he has a luxury of saying that he's a cultural Christian. I don't have the luxury of saying I'm a cultural Christian, but I can be as soft towards Christianity, just like Richard Dawkins is. It's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. And I'm also happy with that कि जो religious dogma है, लोग उस dogma से निकल रहे हैं, चाहे वो Christianity हो, Islam हो, या even Hinduism हो. As far as the cultural element is concerned, I couldn't care less. अगर मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, and I've said this even many years ago, कि अगर इस्लाम उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे Christianity है, I have no problem with Islam. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आप जो मर्जी करें. It's a personal matter. It should be your personal matter. The only difference is Islam goes one step further. Islam एक step और आगे जाता है और कहता है नहीं, हमने यहाँ पे शरीयत नाफिज. That's where the problem lies. But I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think. Or in extension of that, I would also not want कि फैसल मस्जिद चली जाए या मक्का चला जाए या कोई जो खूबसूरत आर्किटेक्चर है, कैलीग्राफी बड़ी खूबसूरत है. I would not want it to be gone. Again, the problem जो है वो problem है ही the political and militant side of Islam. That's the only distinction you can make, which is one that is the cause of the headache. I think it would matter if we substituted any alternative religion. That would be truly dreadful. Well, which brings me to my supplementary point, which is that, as we know, church attendance is plummeting, but the erection of mosques across Europe, I think 6,000 are under construction, and there are many more, are being planned. So do you regard that as a problem? Do you think that matters? Yes, I do, really. I might choose my words carefully. If I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. Oh, Richard Dawkins भी Christunni बन गया है. It's quite fascinating to me कि जो कुछ लंडे के जो so-called atheists हैं, वो इतने dogmatic हैं अपने belief system में कि they are totally oblivious. I think this comes more so. एक ये जो जिस दिमागी मरीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसका तो एक हसद है ना मेरे से कि उसकी वो रीच ना उर्दू स्फीयर में है, ना हिंदी स्फीयर में है, ना इंग्लिश स्फीयर में है, कि कोई रीच नहीं है. So एक तो jealousy का जो element है वो तो है, which propels certain individuals to just go and attack someone. But other than that, there is a genuine fear जो मैंने देखा कुछ लोगों को जो कहते हैं, अब मैं कोई ट्वीट अगर इस्लाम के ऊपर जब भी मैं कोई ट्वीट करता हूँ तो नीचे लिखा होता है इस हिंदुइज्म के ऊपर बात करो. अब मैं यानी एक ट्वीट कर रहा हूँ तो उसके साथ मैं हर वो चीज को टिक बॉक्स करूँ. No, I don't have time to do this. You cannot keep balancing the equation, especially if I don't think कि all ideas are equally dangerous. I've said this many times कि all religions are equally false, but they're not equally dangerous. और जब आप एक ऐसी स्टेज पे आते हैं जब आप ये वाकई एक इतने ह्यूमिलिटी आपके अंदर आ जाती है कि you actually don't care. I don't think I'm an anti-theist. Maybe I never was, but because live stream का एक कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि जब आपको कोई आके कहता है जी हमारी ये अभी जैसे कल एक वो हिंदू आया, वो अपने हिंदू गॉड को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको पेल दिया बुरे तरीके से क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम में बात हुई. अब क्या उस तरह की वीडियो मैंने स्टैंड
स्टैंड अलोन बनानी थी, एब्सोल्युटली नॉट. आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस. तो एक एलिमेंट वो भी है. एंड अगेन आई कैन एम्पैथाइज विद जो एक्स हिंदूज जिन्होंने इंस्पिरेशन ली एक्स मुस्लिम मूवमेंट से, जो अपनी सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज सपोर्ट दिस गाय विमो का चैनल चेक करें. आई एब्सोल्युटली अडोर द गाय. ही इज ए क्लासिकल वेस्टर्न टाइप ऑफ एन एथियस्ट हु इज प्रो रीजन, प्रो साइंस, एंड ही इज ऑल अबाउट डिबंकिंग मिथ्स ऑफ हिंदुइज्म, जो हिंदुइज्म की जो डॉगमेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो उनको अटैक करता है. जस्ट लाइक जो एक्स क्रिश्चियंस हैं वेस्ट के, कॉस्मिक स्केप्टिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड स्केप्टिक एटसेट्रा, या इवन मैट डिलाहंटी, या जितने भी लोग, मिथ विजन फॉर एग्जांपल, जितने भी क्रिश्चियन यूट्यूबर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी को टारगेट करते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे गिव आउट दिस स्टेटमेंट के यस वी बिलीव ऑल रिलीजन्स आर इक्वली फॉल्स. सो इट्स एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. सो आई कैन एम्पैथाइज विद दोस एक्स हिंदू एथियस्ट जो कहते हैं कि जिनको लगता है ऐसे कि शायद मेरी अलायंस उनके साथ टूट गई. ऐसी बिल्कुल बात नहीं है. आई वुड ऑलवेज स्टैंड बाय एक्स हिंदू एथियस्ट. अगर वो अपने आप को एक्स हिंदू एथियस्ट कहते हैं और वो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं और वो समझते हैं कि सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म आर बैड एंड दे नीड टू बी क्रिटिसाइज्ड, यस गो फॉर इट. ऑफ कोर्स आई वुड ऑलवेज सपोर्ट दोस पीपल. जैसे मैंने कहा विमो को मैं सपोर्ट करता हूं. साइंस इज डोप चैनल, ऑसम गाय. दे आर मोर फोकस्ड ऑन हिंदुइज्म बिकॉज़ दैट्स देयर बैकग्राउंड. सो अब रिचर्ड डॉकिंस भी वही बात कर रहा है. नाउ हायरार्की, वी कैन नॉट इग्नोर द हायरार्की दैट इस्लाम इज द मोस्ट डेंजरस मजहब. इससे ऊपर डेंजरस और कोई चीज नहीं है इस वक्त. 1930s में यस आप क्रिश्चियनिटी को पेल सकते थे अलायंस विद हिटलर की वजह से, हालांकि वो भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है. लेकिन आजकल के जमाने में इस्लामिज्म, और उसकी वजह ये शायद लोग मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं मेरे जैसे एक्स मुस्लिम्स में, कि ये एक सिमरिंग प्रॉब्लम है जो कि on paper लगता है जैसे बढ़ रही है. So that's why people are more interested in that. Anyway, it's nice to see that Richard Dawkins shares the same opinion. I mean, it seems to me to be a fundamentally decent religion. Christunni, fundamentally decent religion, Christianity. In a way that I think Islam is not. Ooh. I think you're going to have to explain why you say that, Professor Dawkins. Why is Islam fundamentally not decent like Christianity? Yes, I mean the way women are treated. I mean, Christianity is not great about that. It's had its problems with female vicars and female bishops and things. But and you can say that pretty much every other religion as well. I don't know about Buddhism, but I've seen some elements of Hinduism as well. जिसमें आप ये target कर सकते हैं कि it might have some misogynistic elements in that. Yes, fair enough. All of these religions have these problems because ancient religions जब बनाए जाते थे तो उस जमाने की values के हिसाब से बनाए जाते थे. But Islam is the pinnacle of misogyny. इस्लाम में जो औरतों के साथ होता है और उसकी जो हठधर्मी है कि हमने इसको मेंटेन रखना, फॉर एग्जांपल छोटी बच्चियों की शादी, बीवी की पिटाई, लौंडीबाजी को खत्म कर दिया गोरों ने, थैंक गुडनेस फॉर दैट. लेकिन उसको वो सही समझते हैं, ऑन पेपर लौंडीबाजी को वो सही समझते हैं फिर भी. सो यू कैन से दैट अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स, बट अगेन एज एक्टिविस्ट यू वुड ऑलवेज ओनली टॉक अबाउट what is the most pressing matter. Christianity में प्रॉब्लम नहीं है. हिंदुइज्म जिस तरह इवॉल्व हो रही है, इंडिया मॉडर्न हो रहा है, वैसी प्रॉब्लम्स नहीं है. ऑफ कोर्स इम्पॉवरिश्ड एरियाज होंगे जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी. कुछ वीडियोस आती हैं, हम देखते हैं कोई औरतों को मार रहे हैं, पेड़ के साथ लटकाया हुआ है. दोज थिंग्स आर देयर. लेकिन उनकी सोसाइटी इतनी रिच है कि वो उसके ऊपर खुद काम कर रही है. पाकिस्तान में भी है. पाकिस्तान में भी जो औरत मार्च है वो भी इनके एलिमेंट्स को अटैक कर रही है, बट विदाउट टचिंग इस्लाम. दैट्स द कोर ऑफ द इशू, कि पाकिस्तान के फेमिनिस्ट इस्लाम को टच किए बगैर जो इस्लाम की वजह से बुराइयां आती हैं उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं. It's very difficult for them. For that you need hardcore atheism. लेकिन इंडिया में आप ऐसा हिंदू भी आप लोग उसको पेल रहे होते हैं जो उसके misogynistic elements होते हैं. So again, they all could be equally false, but they're not all equally dangerous. There is a hierarchy है इसकी. Active hostility to women, which is promoted, I think, by the holy books of Islam. I'm not talking about individual Muslims, who of course are quite different, but the doctrines of Islam, the Hadith and the Quran, fundamentally hostile to women, hostile to gays, and I find that I like to live in a culturally Christian country, although I do not believe a single word of the Christian faith. तो कुछ जो एक वजह की बात कर रहा हूँ वो इतना सटपटा गया, हाइट ऑफ नार्सिसिज्म यहाँ तक पहुंच गई है कि वही अपने आप को रिचर्ड डॉकिंस का इक्वल समझता है. लिसन भैया, वो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब का मैं एक्टिविस्ट, ठीक है, 2012 से मैं एक्टिविस्ट, इतना पुराना, ये बेचारे पैदा भी नहीं हुए थे तब, सही है. और बहुत बड़े बड़े काम मैं कर चुका हूँ. जिन लोगों के ये नाम लेते हैं ना, उन लोगों में मैं खुद शामिल रहा, ठीक है. ये रिचर्ड डॉकिंस में शामिल थे ये साहब. 4 हॉर्समैन, बल्कि ये 5th हॉर्समैन था ये भाई. हॉर्समैन 4th हॉर्समैन एंड 5th डोंकी. और बहुत बड़े बड़े काम मैं कर चुका हूँ. जिन लोगों के ये नाम लेते हैं ना, उन लोगों में मैं खुद शामिल रहा, ठीक है. You know, like it's just it seemed extremely embarrassing to. वो मैं अक्सर ये बात कहता था, if you have to say that you are famous, then it means you're not famous. Some things you never say, you make other people say. And I can tell कि ये वो चीजें हैं जो इसको बड़ी तकलीफ देती हैं. मैंने पहले हारिस को सुना, फिर आपको सुना. There are people multiple people notice that he used to get so angry in peacetime.
So these are the problems. खैर ये तो दिमागी मरीज है, but this video was more so for people के Dawkins भी Christunni है. There is a hierarchy of religion and you attack or criticize those religions accordingly. सबसे ऊपर Islam, then Christianity, Judaism maybe, and then Hinduism, Buddhism maybe, and then maybe some other local religions जो बिल्कुल भी अब अगर आप Amazon tribe में कोई बड़ी rituals हैं, कोई बड़ी primitive किस्म के beliefs हैं, do you know of any channel that is constantly saying कि ये देखो कितने बुरे हैं ये Amazonian लोग? Because it doesn't have any impact on the world at large. That's the reason why. So you choose it accordingly. So anyway, I hope this actually makes sense. It's not just me who holds this view. One of the pioneers, if not the pioneer of the new atheist movement, he also shares the same opinion as I do. Anyway, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट से अपने ख्यालात के साथ जरूर करें. अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस साथ. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं.